Hello student, welcome to my channel Brilliant Minds, and today my second lecture in alternating current, and today I will discuss purely capacity circuit and LCR circuit with phasor diagram and question related to DJE and NEET. तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अगर मेरे चैनल के थ्रू आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो उसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँ। तो ओके, स्टार्ट करता हूँ आज मैं अपना सेकेंड लेक्चर। तो सबसे पहले प्योरली कैपेसिटी सर्किट। तो व्हाट इज प्योरली कैपेसिटी सर्किट, कैसे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ? So what is purely capacitive circuit? AC source EMF generating AC voltage V equal to Vm sin omega t is connected to a capacitor only, mean only capacitor in circuit, and it is called what? Capacity circuit. अगर सिर्फ EMF वोल्टेज सोर्स AC वोल्टेज V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t अगर कैपेसिटर से कनेक्ट है, सिर्फ सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, तो उनसे प्योरली कैपेसिटी सर्किट हो गया। सो व्हाट हियर, हाउ कैन find here charge Q is what and current in circuit is what. So here what, using Kirchhoff's loop rule. So Kirchhoff loop rule is what? The summation of voltage drop across circuit is 0. So here voltage drop is what? Vm sin omega t equal to, here voltage drop across capacitor is what? Q equal to Cv, you know. So V equal to voltage drop Vc equal to Q upon V. So equal to Q upon V. So here charge equal to what? Q equal to V Q upon C. So charge equal to here Q equal to Vm C sin omega t. Here is the charge where the capacitor at time t. अगर हमने Q मान लिया, let Q is the charge on the capacitor at any time t, then current is what? So relation is what? Current and charge I equal to dq upon dt. So from this relation is defined current is what on the circuit. So I equal to d q is what? Vm C sin omega t upon here d of dt. So differentiation of this, here is Vm peak voltage constant, C is constant. So differentiation of sin omega t is what? Cos omega t into omega. So I equal to B and C omega cos omega t.
t. So I equal to, if this term take constant and Im, then here cos is what in terms of sine, because here voltage source is what V equal to Vl sin omega t. So also convert this cos omega t in terms of sin omega t. So what cos omega t is what you can write here, sin omega t plus pi upon 2. You know, the sin 90 plus theta is what cos theta. So here is what Im, ki mean here voltage source here V equal to Vm sin omega t. But current source I equal to Im sin omega t plus pi upon 2. Meaning what? Here current is leading by 90 degree with voltage. So phasor diagram is what? Phasor diagram is what? And here Im equal to Vc Vm Vmc omega, mean Vm upon by what? You know, Ohm's law, I equal to V upon R. So here V is Vm and this is the term analogous to resistance. So you can write here in terms of what? 1 upon by omega c. And this term is called Xc. And name Xc is what here? Capacity reactance. And unit of Xc is what? Same resistance, mean ohm. So finally I equal to what? I equal to Vm upon Xc. So here is what? Xc is the capacity reactance. So you can easily find the capacity reactance from the purely capacity circuit. What? X equal to 1 upon omega c. Omega here angular frequency and c capacitance of the capacitor. Okay. Next is what? Phasor diagram is what? Phasor. Here voltage source Vm omega t1 is time t1 there. Current is what? I equal to Im sin omega t plus pi upon 2. Mean here current here leading by 90 degree. 90 degree, pi upon 2. So this is the current and this is the voltage source. Here voltage is what? Vm sin omega t1 and this is the current, and current is Im sin omega t plus pi 1. This is the phasor diagram of purely capacitive circuit. And what is the diagram of V and I versus omega t? Omega t versus V and I, voltage and current. So voltage source is this is 0, pi, 2 pi, here 90. So here what? Voltage current is leading by 90 degree. Mean when voltage is 0, current is maximum. So this is the omega t 1 and here current this point. When voltage maximum, current
0, and this 0 current maximum. Again this 0 current this, and this is the phasor. This is the voltage and this is the current. So this is the phasor diagram of purely capacitive circuit. Now LCR circuit. तो आपने प्योरली कैपेसिटी सर्किट में क्या देखो कि कैसे सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं प्योरली कैपेसिटी सर्किट. उसमें करंट कितना होगा सर्किट के थ्रू अक्रॉस, and what is the charge on the capacitor, and phasor diagram and graph, and now can find purely capacitive reactance. So now phasor is what? Next is LCR circuit. LCR. So LCR circuit is what? Mean pair of resistance, capacitor and inductor. Here voltage V source V equal to Vm sin omega t. This is the LCR circuit. So what is the current on the LCR circuit and phase relationship between voltage and current in the circuit? So if we are using Kirchhoff's loop rule, then here voltage V R VC, this is VL. So what? IR plus here Q is charge Q, then Q upon C plus here L di upon dt equal to what? B. B equal to B sin omega t. So this is the equation of the circuit. So also here right is V equal to VR plus VC plus VL. Now how can find a current the circuit? So this current determined by the method of phasor diagram solutions. There are two types of solution can use. One phasor diagram solution, second analytical solution. So phasor diagram solution is what? So what is the phasor diagram of this? LCR circuit. So phasor diagram of LCR circuit is what? This is V R, then this is current also I, because current and voltage drop equal resistance are parallel. So if comparing current and capacity voltage, so what? Capacity voltage here this, current leading by 90 degree, capacity voltage, this is the DC, and inductor voltage drop across inductor here leading by current 90 degree, and this is the omega t. This is the phasor diagram of LCR circuit. Now how can solve here?
how can determine current? So current, if here 90 degree, so if take this like this is the VR, and if this take VC minus VR, well, this is vector direction, so just in direction of capacity voltage, what VC minus, so what here, if this is the VR, voltage drop across resistance, and this is this VC minus VL, so resultant is what? If vector here, two types vector, this and this, so you can solve this one, if parallel to this, draw this and join resultant. But here angle between them is what? 90 degrees. So if this is the VR, so this is the VC minus BL. So resultant is what? This is the resultant, and we have 90 degrees. And this is the voltage, maximum voltage. Mean here, now, here angle between is what? 90, here 90 degree. So this is Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem is what? This equal to Vm square equal to Vm square equal to Vr square plus Vc minus Vl square, and Vm square is equal to what? I square R square, because Vr equal to IR plus I XC minus I XL, that's square. And if here common I square from both, then what? R square plus XC minus XL square, mean I M square equal to Vm square upon this R square plus XC minus XL square, and this is denoted by Z. So I equal to under Vm upon under root this the square R square plus XC minus XL cos square, and this is denoted by Z this. So you can write here current I equal to Vm upon Z. This is the impedance, and impedance equal to what? Under root R square plus XC minus XL whole square. So this is the current in LCR circuit, and तो ये अभी मैंने डिस्कस किया प्योरली कैपेसिटी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट, एंड उसमें करंट कितना होगा? करंट आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, एंड जेड इज द इम्पीडेंस, एंड यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज व्हाट? सेम एज ओम, रेजिस्टेंस मीन ओम. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व रिलेटेड टू. तो क्वेश्चन है नीट 2018.
only 18. Question what? कि an inductor 20 millihenry और capacitor 100 microfarad and a resistor 50 ohm are connected in series across voltage V equal to 10 sin 340 t. Find power loss. इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है 0.79 वाट, बी है ऑप्शन 1.13, सी ऑप्शन है 2.74 एंड डी है 1.5 वाट। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी है कि एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, द कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज across B equal to 10 sin 340 t। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पावर लॉस फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पावर लॉस I स्क्वायर RMS इंटू R मीन V RMS अपॉन Z स्क्वायर इंटू R। तो हमें क्या चाहिए? V RMS, and V RMS here is what? This is what? V naught, मतलब V maximum. So V RMS equal to Vm upon root 2, mean 10 upon root 2, right? Next Z, impedance is what? R is what here? R is what? Resistance here 50 ohm. Z is what? Z solve what? Impedance, and you know भी मैंने LCR सर्किट में impedance बताया। impedance क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो R स्क्वायर, R क्या है हमारे पास? 50 का स्क्वायर, राइट? XC माइनस XL कैसे फाइंड कर सकते हैं? XC माइनस XC हमने भी पढ़ा था, XC इक्वल टू क्या होता है? 1 upon में ओमेगा C, 1 upon omega. Omega is what here? This is omega. Why? कि V equal to Vm sin omega t. So here 314 is what? Omega. So this is 314 into C. Capacitance is what? Capacitance here 100 microfarad. 100. So convert this in terms of SI unit farad. So 10 to the power minus 6. This is the XC. So what? 100 10 to the power minus 10 to the power minus 4 mean 10 to the power minus 4. So 10 to the power 4 upon 340. Here is what? This is the XC. 10 to the power 4 upon 340 minus XL is what? So XL equal to, मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में बताया था, XL is omega L. So omega is what? 340. L is what? 20 millihenry, मतलब 20 into Henry
millihenry, so converting Henry 10 to the power minus 3 mean 314 into 2 10 to the power minus 2, so what 628 upon 100 mean 6.28. So this is the value 6.28. Here this, how can solve this? Here 314, so take here 10 to the power, this mean you take approximate value this upon with 310, this now what 31 3 ja 93 7 70 31 2 ja 62 so left 6 62 left 8 80 2 62 take 32.2, so what here 32.2 and this 50 square 2500 plus 32 minus 0.2 minus 6.28, so what 32 approx value 32 minus 6 is what 32 26 का स्क्वायर. मैं यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू लेना क्योंकि ये ऑप्शन अप्रॉक्स लेना हुआ, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा. अगर आपने एग्जैक्ट निकालने की कोशिश किया तो इंट्रेंस में ये प्रॉब्लम है कि आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं, वो लेना होगा. तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, सो हेयर 676 2500 plus 676 is what 67651 3176. So this is the value of Z is what 3176. So P average is what, power loss is what I VM VRMS here is 10 root 2 a square into R is what 50 and Z a square is what, this is the 3176 a square. So root and a square cancel, this is the root cancel here, left is what only 3176 or 70 now, this cancel, so 10 here 100 root 2 a square 2 5 317, so what 2 500 upon 317 2 ja 7 2 ja 14 left 1 3 2 3 3 2 ja 6. So here option is what, this one, correct. Why this divided less than 1, so approx value is this, so this is the correct option. तो अगर मैंने यहाँ देखा कितना टाइम लगा, कितना टाइम आपके पास नहीं होगा, आप जितना ज़्यादा अप्रॉक्स वैल्यू लेके इस जिसके क्लोज आ सकते हैं. मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ जो कि बोर्ड में भी बहुत इस टाइप के क्वेश्चन है और इंट्रेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि व्हाट द इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक करंट in a circuit I equal to I naught T upon tau for some time. Calculate the RMS current
for the period t equal to 0 to t equal to tolerance. तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आरएमएस करंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इसे? तो सबसे पहले हम मीन करंट कैसे निकाल सकते हैं कि मीन करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हमें देखना है मीन करंट। सो मीन करंट I square equal to what? 1 upon में tau 0 to tau I square dt। और यहाँ क्या हो जाएगा? I square dt I square dt 1 upon में tau 0 to this I square is equal to I naught t अपॉन में tau का स्क्वायर dt। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ कांस्टेंट क्या है? 1 अपॉन tau। I नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 1 अपॉन tau कांस्टेंट है, वो भी बाहर हो जाएगा बट स्क्वायर के साथ। एंड बचा क्या? t स्क्वायर dt। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? सो दिस इक्वल टू I स्क्वायर इक्वल टू I naught square upon में t tau cube and integration of t square dt is what? T cube upon 3, so 0 to tau mean what? I naught square, this is tau and putting the value here, upper limit minus 1, so tau cube upon 3 and this is 0, so this cancel, left what? I naught square upon 3। तो ये हमारा मिल गया क्या? मीन करंट। सो मीन करंट इज दिस, देन व्हाट इज द आरएमएस करंट? सो आरएमएस करंट इज व्हाट? आई आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर। सो अंडर रूट आई स्क्वायर इज व्हाट? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3 मीन आई नॉट अपॉन रूट 3। दिस इज द आई आरएमएस। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ऑल सर्किट जितने भी है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं तो आप इजीली इंट्रेंस में इजीली से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।